गोटे लोक पूरा रास्ता को पड़ाइले छाड़ा जने से जो दी जन आंबा जने ना गुड मॉर्निंग आज हम देखिबा वाइस प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल ऊपर देखिबा तापर जदी समय हबो यूनियन लेजिस्लेचर ऊपर भी टिके नजर पके दबा जते शीघ्र हमें सारीबा ओके सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल एगुरा सब देखिबा एटा रेस्ट पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव रो प्रेसिडेंट पार्ट हम सारथिले एटा देखिबा तापर तार एमसीक्यू भी अछि मेजर वाला एमसीक्यू कथा हम एटी प्रभाव पकेबा तापर यूनियन लेजिस्लेचर भी यदि पारिबा समय हबो देखि दबा हला ओके वी शुड स्टार्ट वाइस प्रेसिडेंट हम पढ़ितले प्रेसिडेंट टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स जो अछि हमर ऑफिशियल रैंकिंग रे आगो की आछि हमर ऑफिशियल रैंकिंग दर देखिबो ऑफिशियल रैंकिंग इन इंडिया ऑफिशियल रैंकिंग इन इंडिया टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स कहती टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स नहीं प्रेसिडेंट्स एतिरे फर्स्ट आसीबो प्रेसिडेंट तापर आसीबो वाइस प्रेसिडेंट तापर प्राइम मिनिस्टर तापर जो हमर गवर्नर नहीं कि एमती सब रहिले आकर हायरार्की रा तापर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अछि ओके सो वाइस प्रेसिडेंट होचनी सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ए बास्ट आनिचे कोडू हमें यूएसए रो आनिचे वाइस प्रेसिडेंट रो प्रोविजन ताकर वाइस प्रेसिडेंट अछनी हमर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट वीपी इज इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट कौन इलेक्टेड तो तांकर इलेक्शन किए कंडक्टेड बाय इलेक्शन कंडक्ट किए करे कंडक्टेड बाय दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई कंडक्ट करे एवं तांकर इलेक्शन जे कंटेस्ट करिवो से कैंडिडेट को 20 इलेक्टर सपोर्ट करिवे 20 इलेक्टर ताको कोन सेकंड करिवे अर्थात सपोर्ट करिवे प्रपोजर सेकेंडर्स देन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 50-50 अंकर 20 एवं द सेम अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट आरबीआई रे देबे जे वाइस प्रेसिडेंट पे कंटेस्ट करिवो सो सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट होची 15,000 with RBI okay so that is called the vice president's elections okay so, and election जो इलेक्शन तो हम देखिबा आउट के disputes okay तार सिस्टम ना कोन इलेक्शन को बेसिस रे हुए बेसिस ऑफ इलेक्शन बेसिस कोन इलेक्शन रो बेसिस होला proportional representation by means of by means of single transferable vote से सिस्टम रे तांकर करा जाए transferable vote आ गोटे कथा कोन ना जदी disputes related to election disputes of election are decided by the Supreme Court of India okay so seta hochi tar major jinsh disputes are decided by the Supreme Court of India okay
and then qualification ତାଙ୍କର vice president qualification ଏଟା ସେଇ same qualification citizen of India ଆଉ କଣ number 2 35 years of age or above. Number 3 should have qualifications to become a member of कार राज्य सभा. ओके मेंबर ऑफ राज्य सभा एटा तांकर आंकर प्रेसिडेंट कर कोन इलेक्शन रे लोकसभा क्वालिफिकेशन दरकार आंकर राज्य सभा. नंबर 4 should not hold any office of profit. Okay, that is the qualification of the vice president. Okay, so qualifications of vice president. Vice president of India okay, that is called the vice president. Okay, and that is it is article केतेटा article जब होतले article 66 kindly remember that. Okay, now qualifications gone, then we shall move to tenure of the vice president. Tenure रे कोन अछि tenure केते तो 5 years. Tenure is 5 years. Okay, किंतु वाइस प्रेसिडेंट जदि टेन्यूर जदि से कंटिन्यू करिवे जदि तांकर टर्म इफ इट्स टर्म पूर्व जदि वैकेंसी हुए no constitution does not provide anyone to become acting vice president. There is no term as acting vice president. So ताले कोन करा जिवो ना जे कोनोसी 6 मास भीतर within 6 months there must be election. खाली एति कहैछि जदि if there is a vacancy in the vice president's office, it is provided that election must be held within 6 months from the date of such vacancy. Okay, so something is 9 no acting vice president. No acting vice president. Okay, so that is the things you have to remember. Now move to the next part of the things, emoluments. So vice president will fix darama panti salaries. So that is 4 lakh, but then after 7th pay, and it is a charged expenditure. It is a charged or non-votable expenditure on the consolidated fund of India. Consolidated fund of India, article 266. Hello, that is 4 lakh per charged expenditure. Kintu VP is not
entitled to any post retirement benefits. पेंशन की अन्य किसी जिनस नहीं रिटायरमेंट बेनिफिट्स if he is not entitled to any post retirement, no pension, nothing else. Okay, then oaths and affirmation. Oath is given to him, oath is administered to him by president or president नहले अन्य के president जाओ कहबे से कर परियो. So oath is administered by the president. Now term of office and removal. Term तो कहली, that is 5 years. Removal. Vice president is removed by a resolution moved in and passed by Rajya Sabha. In absolute majority. Absolute majority माने absolute majority. Absolute majority माने half of the total strength. जते strength थी वो house रो total strength, present strength, ताको divide by 2. किते आसंतु न आसंतु, किते absent था तो जा था, किंतु total गड़ा मेरा उदा माने 245 absolute majority by 245 divided by 2 plus 1 Rajya Sabha and agreed by Lok Sabha. Lok Sabha agree karibo simple majority. So this is the removal. Okay, no ground is mentioned. किसी ground नहीं. President impeachment ground कौन? Violation of constitution. किंतु आकर सेमती किसी mention है नहीं. कौन टा ground रही? Okay, so that is called no ground is mentioned. I was trying to remember. Now vacancy. Vacancy केमती पड़िबो president के office रे, vacancy केमती vice president के office रे आसी. Vacancy आसीबो 5 वर्ष पूरी गले सेटा ଗୋଟେ vacancy. Resignation to कागु देबे president. एवं removal कथा तो कहली removal है. तापरे एटा होची only president, only vice president. Only vice president to die in office. It's Krishnakant. Only vice president to launch. Krishnakant only vice president to die. Okay. So they were जतोले remove जतोले vacancy हम कहली कि सेमती acting vice president किछि नाही केवल ताकू 6 मास भितरे election हबा को कहैछि. Powers vice president रो powers किछि नाही विशेष. Powers तर बहुत कम vice president रो. So he is the only a acting chairperson of Rajya Sabha under article केते? Article 64 अनुसार राज्य सभा चेयरमैन हेले बेले स्पीकर भली तांकर सेम पावर अछि एक्सेप्ट कि मनी बिल और जॉइंट सिटिंग रे तांकर रोल न थाए. मनी बिल को से सर्टिफाई करि परंतिनी और जॉइंट सिटिंग रे प्रिजाइड करंतिनी. बाकी अन्य सब काम गुडा जा स्पीकर करंती से सेतिरे भाग नियंती. तो से भी चेयरपर्सन ऑफ द हाउस. डिफरेंस कोन न स्पीकर होचंदी लोकसभा रो मेंबर. स्पीकर इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा but vice president is not a member of Rajya Sabha. Speaker certifies a bill, money bill. Vice president does not have the power.
President Speaker presides over the joint sitting. Vice President does not preside over the joint sitting. These are the difference between the Vice President and the Speaker of Lok Sabha. Otherwise, other powers are shared, but same as the Speaker. से भी प्रिजाइड करती ये भी प्रिजाइड करती से भी मेंबर मान को एंटी डिफेक्शन अंडर रे डिस्क्वालीफाई करेंगे ये भी डिस्क्वालीफाई करेंगे तांकर भी कास्टिंग वोट अच्छी आंकर भी कास्टिंग वोट सो देयर आर मेनी एंगल्स वाइस प्रेसिडेंट एंजॉयज द इक्वल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट किंतु डिफरेंस जोड़ा कहली सेटा मन रखे तापरे ही होल्ड्स ऑफिस ऑफ इंडिया एज एक्टिंग प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल it article के 65 अनुसार अच्छी जो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया and at that time he is called acting president so 65 under it is जेतबेले राष्ट्रपतिंकर जो ऑफिस रे खाली पड़िबो सेतबेले वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हेबे এবং फास्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट के थिले वीवी गिरी was the first acting president वीवी गिरी was the first acting president of India. Okay, so that is the things about vice president, acting president. Vice president tole acting current president hisabare he enjoys all the powers and all the privileges of the presidents of India. Okay, president of India tankar jaha jaha khamata thae se tole se sabu khamatar adhikari huanti difference between USA president hala Indian vice president Indian VP acts as president for not more than 6 months but American vice president acts as president for the rest of the term अर्थ जदि 4 years भितर जदि 1 year पर प्रेसिडेंट कर किसी है ताले अमेरिकन प्रेसिडेंट 3 years रही और 1 years पर जदि किसी है कि इवन 1 day पर कि 2 days पर है ताले रिमेनिंग पीरियड पूरा रही किंतु हमर 6 month कराई 6 month भितर इलेक्शन होबा नुआ प्रेसिडेंट दैट इज द डिफरेंस अदरवाइज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए इज द चेयरपर्सन ऑफ सीनेट तांकर अपर हाउस ना कोन अमेरिकार सीनेट तो सी भी सीनेट रो चेयरपर्सन हमर इंडियन वाइस प्रेसिडेंट होसंती अपर हाउस राज्यसभा रो चेयरपर्सन सो इक्वल पावर तांकर प्राय एका जिंस किंतु ये 6 मास रहिला बेले से पूरा रेस्ट ऑफ द टर्म रही ओके सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑफ द यूएसए ओके बाकी आर्टिकल उरा कहली 63 देयर शैल बी प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन 66 टा इलेक्शन देछि एटी मन रखिबो आर्टिकल किछटा इंपोर्टेंट आर्टिकल कथा कहिछि ओके नाउ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओके वाइस प्रेसिडेंट रे उटा काई लिस्ट देछि मु कहूछि जे एम वेंकैया नायडू उटा देछि हां 2017 रे तो एटा हमरा जिनसे को फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट किए सर्वपल्ली राधाकृष्णन सेकेंड जाकिर हुसैन एरा तो देखिबो बीबी गिरी गोपाल स्वरूप पाठक बीडी जति इदायतुल्ला एटा फर्स्ट एटा जो सीजीआई थिले सीजीआई ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट हिचंती शौकत दयाल शर्मा के आर नारायणन कृष्णकांत भैरव सिंह शेखावत मोहम्मद अंसारी वेंकैया नायडू ओके सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्रेसिडेंट ये रैंक अनुसार 13th या मोहम्मद अंसारी दिथर रही ओके सो एटा होची कथा एटी काहे कि आनी छि मोर देखिए पे ना केतेक वाइस प्रेसिडेंट हेइछन्ती केतेक वाइस प्रेसिडेंट हेइना तो एई माने एई जो 3 जण रहिले ए माने बिकेम प्रेसिडेंट
became president. ये जो तीन जन रहिले ये तीन जन not became president. ये जो तीन जन रहिले became president. ये जो तीन जन रहिले not become president. तार तो प्रथम फास्ट तीन जन प्रेसिडेंट हेले सेकंड तीन जन हेलेनी थर्ड तीन जन हेले फोर्थ तीन जन हेना तापरे वेंकैया नायडू को पाड़ी पड़छ तो एटा हेई पारंती से अनुसार लॉजिकली जदी जीवा ओके एनीवे so these are the vice president who have become president. These are the vice president who have not become president. So kindly note of it केते जण vice president president हेचंती के जण vice president president हेनाते so ये भी गोटे क्वेश्चन एरिया हेई पारे so kindly remember it. I have given you the things बाकी अन्य जो माने सब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट न होई कि प्रेसिडेंट हेचंती से माने कथा इजीली जानि हबो ओके सो दर हमर प्रणब मुखर्जी ले रामनाथ कोविंद ले APJ Abdul Kalam, Pratima Devi Singh Patil, they could not they became president without becoming vice president. तो से माने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट न होई कि प्रेसिडेंट हेचंती सो एमान सब किंतु हमर ये अछि कि नीलम संजीव रेड्डी भी अछि नीलम संजीव रेड्डी वाइस प्रेसिडेंट हेइनी नीलम संजीव रेड्डी ओके ज्ञानी जैल सिंह भी वाइस प्रेसिडेंट हेइनाति ज्ञानी जैल सिंह गुटे अछंती वाइस प्रेसिडेंट हेइनाति so these are the factors you have to delineate about okay so these are the things now come to the that is the prime minister hochunti head of the government head of the government head of the government of India a de facto head de facto ruler of India. It is modeled upon British Prime Minister. Okay, Prime Minister is elected or appointed. Prime Minister is appointed. Prime Minister is appointed. Appointed by whom? By President. Usually, the leader of the largest party in Lok Sabha is appointed as so appointed. Qualification कौन तांकर qualification कौन रहा दरकार Prime Minister रा to be a member of Parliament. So to be a member of Parliament or MP हवा दरकार. But a person can be appointed as PM without being an MP. Okay, for a maximum period of 6 months. एवं से 6 मास भितर से
गोटे मेंबर हवा दरकार नले पदवी बाहर कर दिया सो टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर इज टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जदि मेंबर न होइतिबे 6 मास पर्यंत से बिना मेंबरशिप रे प्राइम मिनिस्टर रही परिबे ओके सम इंपोर्टेंट आर्टिकल्स यूर प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड कोन ए आर्टिकल टा देखो एटा 74 टा होची एड एंड मनयुक्त एड एंड एडवाइस to the president by council of ministers headed by the PM. Aid and advice. The aid and advice has been made binding upon the president by 42nd Amendment Act 1976 अर्थात तांको एडवाइस बिना प्रेसिडेंट किछ कर परिन अर्थात प्रेसिडेंट कर किछ निजस्व रोल रहिबनी सो इट हैज कट the powers of president or influence or the prospect of president being powerful to many extent to a greater extent that is 74 75 रे कोन ना अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर को आर्टिकल अछि अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर appointment of ministers on the advice of prime minister collective responsibility of council of minister collective responsibility और individual responsibility ये हम देखिबा ये बुझिया दरकार individual responsibility चारटा अछि ओके अपॉइंटमेंट मिनिस्टर्स that is individual responsibility so 75 rating अछि okay so appointment of the prime minister को आर्टिकल अछि 75 appointment of the minister को आर्टिकल अछि 75 collective responsible माने कोन ना council of minister is collectively responsible to lok sabha सेटा हम पढिबा सेटा हम कहबी तुम 75 रे कोन अछि टी मन रख तापरे 78 रे कछि कोन आर्टिकल duties of prime minister to communicate to the president regarding decisions taken by the council of ministers एटा ओके सो ड्यूटीज जब प्रेसिडेंट जा मागिबे डिसीजन कोन जानियो चाहिबे सेटा भी से फर्निश करिवे ही विल फर्निश द इंफॉर्मेशन as has been called for by the president so 78 are duties of the prime minister to communicate to the president because prime minister is the central link between the council of minister and the president okay so that is the duties तबरे powers of prime minister टिके नजर पकई दबा prime minister occupies a unique position in power and prestige his powers and functions are he recommends the list of ministers se recommend karanti list of council of minister निज appointment हला परे president cannot drop president चाहिले से list को से कहिबे कि minister of distributes the work or distributes portfolios he can dismiss an erring minister silence he can ask him to resign or
advise the president to remove him. He presides over the meeting of the cabinet. He supervises, coordinates the working of various departments. He is the main spokesperson. That is link between council and minister president, advises the president on issue of making important appointments. Obviously, that MCQ ପାଇଁ ଦରକାର नहीं तो ଖାଲି ନଜର ରଖିବ. ओके तापर advises the president to dissolve Lok Sabha. President चाहिले प्राइम मिनिस्टर advise करिवे dissolve करदा पे जेतबेले लास्ट सेशन हे जो से कहि देबे न जेतबेले नो कॉन्फिडेंस मोशन हारी जिवे सेतबेले कहिबे. ओके जेतबेले अनास्था प्रस्ताव रे हारी जिवे प्राइम मिनिस्टर सेतबेले भी कहिबे. नले ठीक 5 वर्ष पूर्व लास्ट सेशन पर रेकमेंड करिवे. He plays a leading role in making policy statements. He is the ex-officio chairperson of important committees, appointment committee, political committee, economic committee, a committee on employment and skill development, committee on economic development and investments. The committee on a data committee 1 or 2. A 1 and 2 okay were recently created, have been recently created. Modi nije tiyari karchandi eto ebe committee on employment. So these are cabinet committees. Mane important decision niyanti government regarding appointment committee la ki control auditor general abo ki election commission mane recommend karanti. So prime minister होचंदी ए कैबिनेट कमिटी रो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन जे प्राइम मिनिस्टर रो से चेयरपर्सन एवं ए दीटा कमिटी एबे 2019 रे तयारी सेकंड टर्म रे मोदी तयारी करछंदी फॉर बेटर एम्फासिस ऑन दिस एस्पेक्ट्स. गवर्नमेंट कमिटी ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट ए पांचटा कमिटी रे चेयरमैन होचंदी प्राइम मिनिस्टर. ही अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज. ठीक अछि चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में छाड़ दीजिए. नीति आयोग अपडेट है नीति आयोग इंटरस्टेट काउंसिल जोटा अच्छी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्सेस है. ही इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी. से कहिबे कोन राज्य देशर वैदेशिक नीति कोन हो से कहिबे तांको कथारे चलिबो. तो सेटा होची तांकर काम सेटा भी मन रखिबो. चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी. कोटेशन प्राइम मिनिस्टर पर कोटेशन देछि तमरो एनटीपीसी रे बहुत समय रे देखिछि कोटेशन क्वेश्चन गुरा पढुछि. तो एटा टिके नजर पकैतेबो किए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी कंपेयर्ड विथ द यूएस प्रेसिडेंट. ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. बी.आर. आंबेडकर कहछन जदि अमेरिका राष्ट्रपतिंकर क्षमता और प्रभाव सहित क्या समान करा जाए इंडिया अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन ताले से होचन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नो. द गवर्नमेंट इज द मास्टर ऑफ द कंट्री and the prime minister is the master of the government. HR Greaves कहथिले prime minister is the captain of the ship of the state. Thomas Munro. Prime minister is the steersman of steering wheel of the state. Ramsey Moir describes prime minister as interstellar luna minors, a moon among lesser stars. Harcourt. He is the rather a sun around which the planets revolve. He is the keystone of the all roads in the constitution leads to the prime minister. Jennings. अर्थ सी जहाँ कहिबे से all roads leads to the constitution माने कोन तो माने प्राइम मिनिस्टर जहाँ कहिबे से जो चेंज कहिबे सेटा ही करा जे. Pivot around which entire governmental machinery revolves. Lasky. तो एटा मन रखिबो बेले बेले कोटेशन क्वेश्चन आसे कि प्राइम मिनिस्टर कहितले सेमति फास्ट एम इक्वल भी ओटा अछि. तो एगुरा सब मेजर जिनस एग्जाम ओरिएंटेड गोटे मन रखियो प्राइम मिनिस्टर. एवं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सहित इंडियन प्राइम मिनिस्टर कंपेयर करा जाए कारण ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भली इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी बहुत क्षमतार अधिकारी. एवं प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करिया पई गोटे पीएमओ अछि. तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कहंती तापर नजर रख. ये 47 रे तयारी हितला. 61 रे डिपार्टमेंटल स्टेटस गोटे पाइला बा गोटे मिनिस्ट्री रो स्टेटस पाइला. पीएमओ रे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरियल असिस्टेंस पे रखाई. तेणु से पीएम को बेले बेले टिके अलग दृष्टि देखते किए कहते सुपर कैबिनेट किए कहे सुपर गवर्नमेंट किए कहे गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट
कहीं यहाँ पीएमओ जहाँ डिसाइड करे प्राइम मिनिस्टर जहाँ कहती पीएमओ को कंसल्ट करती पीएमओ कथार प्राइम मिनिस्टर इन्फ्लुएंस पीएमओ जहाँ कहे से ही कायम रहे तो तार पैरेलल जी अच्छी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से तार आठ सुपीरियर बॉडी से ही पारे से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को सुपर कैबिनेट गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट बहुत किसी सारा क्रिटिसाइज कराई है ना so this is the PMO then नजर पकई दियो लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर अच्छा आ गोटे कथा कहया भूली गली कि ब्रिटिश PM must be a member of the lower house माने को हाउस ऑफ कॉमन्स बा हाउस ऑफ कॉमन्स लोअर हाउस ना कौन लोअर हाउस बा हाउस ऑफ कॉमन्स किंतु इंडियन पीएम can be a member in either house of parliament. One can become member of Lok Sabha, one can become member of Rajya Sabha. Okay, can be a member of ताकर होची गोटे हाउस रही परी लोअर हाउस और आउट कथा कोन ना प्राइम मिनिस्टर्स PMs और प्राइम मिनिस्टर लिख दो तुम कंफ्यूज हो प्राइम मिनिस्टर्स फ्रॉम राज्य सभा प्राइम मिनिस्टर्स फ्रॉम राज्य सभा इटा कि हमर इंदिरा गांधी 1966 रे SD देवगौड़ा 1998 रे और MM मनमोहन सिंह 2004 रे so these are the three prime ministers who have been from Rajya Sabha बाकी टी देखिबो एटा पूरा लिस्ट पूरा की कोन हेतले गुलजारीलाल नंदा फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर तापर सेमती सब एई देखिबे मोरारजी देसाई शॉर्ट टर्म रे अछंती ए कंप्लीट करनांती टर्म ओके 64 ये 66 कॉलोनी ये भी 66 रे 77 ये दुटा टर्म रहिले तापर ये भी जो मोरारजी देसाई 2 वर्ष रहिले ये गोटे वर्ष रहिले इंदिरा गांधी पुणे असले रहिले राजीव गांधी पुणे रहिले वीपी सिंह असले से भी वर्ष रहिले चंद्रशेखर भी सेमती रहिले से 3-4 मास ये भी सेमती शॉर्ट टर्म सैगुरा सब एवन सब वीपी सिंह चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर जो नरसिंह राव पुणे कंटिन्यू कले फुल टर्म तापर अटल बिहारी वाजपेयी भी सेमती बहुत कम दिन रहिले तापर SD देवगौड़ा असले से भी बहुत कम दिन रहिले आईपी गुजराल भी कम दिन रहिले तापर अटल बिहारी वाजपेयी कंटिन्यू टू रूल तापर मनमोहन सिंह got the hold 2004 ରୁ 14 रहिले 10 years तापरे कड़ा हमरा नरेंद्र मोदी became the prime minister ओके एराटी नजर रखिबो सब फर्स्ट थिंग्स सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग होचंती नेहरू ओके so these are the prime minister एटा बोले लुचि जाइए मोदी का नाम डाटा लुचि जाइए अच्छी मोदी का नाम तले anyway so that is called the prime minister's list now come to the central council of ministers which is the real executive okay council of ministers लिखि दो जी council of ministers headed by the prime minister is the real executive in India. Okay, the ministers are
ministers are appointed. Ministers are appointed. Are appointed by president on the advice of the PM. Qualification: to be an MP. Remove by president on advice of removal. ओके बाकी सैलरी एगुरा सब डिटरमाइन करे पार्लियामेंट टी नजर पकेया था इतरे कोन गोटे बड़ जिंस अछि ओके अपॉइंटमेंट्स कहली अपॉइंटमेंट्स इज मेड बाय द प्रेसिडेंट on the advice of the prime minister. Oath and affirmation is given to him. Ministers are given oath by the president or his nominee. ओके मिनिस्टर्स आर गिवन एवं से माने सही संविधान प्रति से माने विश्वस्त रहिबे लोकंकर निस्वार्थ भाव सेवा करिवे एंती करी बहुत किछि ओथ से मान नेबे ओथ करिवे पब्लिक ऑफिस रो ओथ नेबे से ओथ भी नियंती से माने तापरे कंपोजिशन ए जो जिनसडा हम लिखिछि कंपोजिशन कोन ना साइज ऑफ द साइज ऑफ मिनिस्ट्री अर्थ कोन ना how many ministers how many ministers to be there maximum तो संविधान रे सेमति किछि उल्लेख नै केते जन मिनिस्टर रहिबे बट 91st अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 रे करा गला कोन the minister size in the council members shall not exceed 15% of the total strength of the house of the people. House of the people. The माने सेंट्रल गवर्नमेंट रे 543 दिया जिवो टोटल स्ट्रेंथ 545 जदि नेबो 43 नियाउजी 2 नाहंती इनटू 15%. ओके the माने एटी मैक्सिमम 81 मिनिस्टर्स रहिबे 81 मिनिस्टर्स एट सेंटर. एटा को अमेंडमेंट रे कराला 2003 एटा कारण नुह कि पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट एटा नुह कि अधिक एक्सपेंसेस अलग कथा बट ड्यू टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रॉब्लम हैला का कोन पोर्टफोलियो दिया जिवल लिमिटेड नंबर ऑफ पोर्टफोलियो रहिला सेति पे डिफरेंट करी कि साइज कराइ छि मैक्सिमम एति रे राज्य मानकर भी सेति रखाइ छि 15% किंतु राज्य मानकर गोटे कथा कहै छि नॉट लेस देन 12 रही परिबन तो जोटा हायर हबो सेटा 12 रु कम हे परिबन सो एटा मंडक हाउस ऑफ द पीपल रो 1/3 टोटल पार्लियामेंट रो 1/3 15% नो दैट इज ओके सो दैट इज एटा टे मन रखिबो 74 जबरे कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी हम कहितली कहया पे कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी कोन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स headed by the PM is collectively responsible to Lok Sabha. Collectively responsible to Lok Sabha. अर्थ लोकसभा रे जेपर्यंत तांकर मेजॉरिटी अछि से माने कंटिन्यू करिवे अदरवाइज मन जिवे
कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते अर्थात जनक दोष पाई समस्ते दंड पाई पारती तेणु गवर्नमेंट जदि भांगी जीव समस्ते जीव आउ गोटे कथा कौन कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी माने कि जितेबाला गोटे कैबिनेट निष्पत्ति निया सरकार केंद्र सरकार समस्त मिनिस्टर माने से जो मतामत निष्पत्ति को मानिबा पई बाध्य बा दे शुड अबाइड बाय द डिसीजन दे कैन नॉट गो अगेंस्ट द डिसीजन can it a collective responsibility whatever decision is taken at the cabinet is final and every member of the council of minister has to abide by that decision जदि कोनोसी मिनिस्टर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी को वायोलेट कला अर्थात कहला कि माने जदि से निष्पत्ति विरुद्ध रे किछि कहिले बा किछि तार निष्पत्ति विरुद्ध रे किछि स्वर उत्तोलन कले he has to resign the first minister resigned from the union cabinet is the first minister resigned from the cabinet was R.K. Sanamugam Chetty. If I first finance minister of India, he was the first to resign 1947 এবং after general election 1952 after general election first general election you can write first general election B.R. Ambedkar was the first minister to resign Hindu code bill against Hindu code bill जो बिल कराइतला से प्रोटेस्ट करके बी.आर. अम्बेडकर रिजाइन करथिले एटा फास्ट होची आर.के. सनमगम सो जदी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी वायोलेट हुए ताले ताको रिजाइन करियो पड़िबो सेति पय एटा माइंड रखिबो फर्स्ट मिनिस्टर टू रिजाइन इज कैबिनेट मिनिस्टर आर.के. सनमगम चिटी एंड फर्स्ट जोटा अछि हमर अम्बेडकर रिजाइन कले ओके with the first defense minister of India Baldev Singh with the first finance minister of India that is to कहली first railway minister okay John Mathai first education minister Abul Kalam Azad okay so first जोटा अछि हमर फर्स्ट जनरल जो कोन एटा देखियो individual responsibility भी article 75 ministers are individually responsible to president it means president can remove a minister under advice of the so that is called individual responsibility. They are collectively responsible to Lok Sabha but individually responsible to president. The collectively responsible to parliament खाली अछि Lok Sabha option नाही ताले parliament हबो. Are you getting my point or not? Central ministers are collectively responsible to
Option A President, Option B Prime Minister, Option C Parliament, Option D Judiciary. तो ऑप्शन सी हवा आंसर प्राइम पार्लियामेंट कारण लोकसभा नहीं जदि पार्लियामेंट अच्छी लोकसभा अच्छी तो आंसर लोकसभा हम ओके सो पर्टिकुलर जदि कह लोकसभा किंतु ओवरऑल पार्लियामेंट कही हम दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी रिमेंबर द थिंग्स नाउ वी शैल मूव टू द कैबिनेट कैबिनेट टा कहले कोन कैबिनेट होची दैट इज कंसिस्टिंग 15 to 20 members can out of 60 81 members among cabinet royal important portfolios including home foreign affairs defense finance it includes cabinet ministers only it meets as a body frequently usually once in a week okay decision regarding it is the highest decision making authority in our politico administrative system the supreme executive determines the functions of the council of ministers it enforces collective responsibility okay it is therefore regarded as wheel within a wheel ଯଦି କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ହୁଇଲ ନବା କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ଯଦି ଗୋଟେ ହୁଇଲ ନବା କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର କୁ ଇଟ୍ ଇଜ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଓକେ ତା ମଝିରେ ରହିବ କିଏ ନା କ୍ୟାବିନେଟ ତ କ୍ୟାବିନେଟ ଟା ହୁଇଲ ୱିଦିନ ଦ ହୁଇଲ ୱିଦିନ ଦ ହୁଇଲ ओके सो सेटा ता कुआ जे व्हील विदिन व्हील कैबिनेट एवं पार्लियामेंटरी फॉर्म को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कुआ जाए प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कुआ जाए कारण एमानकर भूमिका बा एमानकर पावर बा एमानकर आधिपत्य थाए कैबिनेट जहाँ कहे देशर भाग्य निर्धारण होता है ओके तुम विशेष भाव में देखुव सब कैबिनेट निष्पत्ति न्यूज पेपर रे बाहर तो सेगुरा सब कारण हूँ कैबिनेट हूँ आम देशर सर्वोच्च बा जो निष्पत्ति नब बा जो योजना बा सिद्धांत नौथिबा संस्था बा ग्रुप बॉडी इज द लार्जेस्ट हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन अ कंट्री से पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बहुत समय कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कह जाए कारण कैबिनेट हूँ देशर सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग बॉडी गॉट इट तेणु व्हील विदिन द व्हील कह जाए कैबिनेट सेक्रेटरी जमती प्राइम मिनिस्टर को हेल्प करिया पई जमती पीएमओ अछि सेमती कैबिनेट मिनिस्टर मान को हेल्प करिया पई कैबिनेट सेक्रेटरीएट थाए से एजेंडा तैयारी करे प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा ऑफ द एजेंडा कोन ऑफ द एजेंडा खाली प्रेसिडेंट एजेंडा माने कोन करा जीवो मिनिस्टर माने कोन करिवे एगुरा सब कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द डिसीजन जानिया जाए सेक्रेटरीयल असिस्टेंट कैबिनेट कमिटी मान को दिया जाए तापरे इन्फॉर्म प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑल द सेंट्रल मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट सब कार्यक्रम तुमको जना जाए चीफ कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी वाचेस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कैबिनेट डिसीजंस रिपोर्ट रखे हैंडल्स अपॉइंटमेंट अलॉटमेंट पोर्टफोलियोज ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्टर्स वेरियस रिक्रूटमेंट्स सेक्रेटरीएट जमती हमर ओडिशा सेक्रेटरीएट अछि सेमती तांकर सेक्रेटरीएट एवं कैबिनेट सेक्रेटरी हला कैबिनेट सेक्रेटरी इज द हेड is the administrative head of the central government. Okay, political head है कि PM is the political head. Okay, so that is to be remembered. Cabinet Secretariat. Cabinet Secretary is an important body which helps the cabinet minister function effectively under a democratic model of India. Okay, एगुला मन रखिबो कोन अटॉर्नी जनरल होची अटॉर्नी जनरल कोन द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर in India. He or she should have the qualifications to become a judge of
Supreme Court, judge of Supreme Court ଅଛି ଏଟା ତେଣୁ ସେ ଜଜ୍ ହେଇଥିବେ ହାଇକୋର୍ଟର ନହେଲେ ଜଜ୍ ଆଡଭୋକେଟ୍ ହେଇଥିବେ ହାଇକୋର୍ଟର ଏଟ୍ ଏଜ୍ 5 years କି ନହେଲେ ଏମିନେଣ୍ଟ ଜୁରିଷ୍ଟ ହେଇଥିବେ ତ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ଯେଉଁ ରହିଲା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ା so that is their qualification to become a judge of Supreme Court କିନ୍ତୁ he is not a judge appointed by president on the advice of the PM. Okay, তারপরে removed by president okay that is without assigning any reason and he holds office during the pleasure of the president. Okay, and ତାଙ୍କର function କ'ଣ okay represents the central government in Supreme Court while article under that is during the judgment on judgment that is judgments under article 143 represents government of India in other all legal cases where government of India is a party তারপরে participate in the proceedings of parliament without right to vote তারপরে right to audience in any court or tribunal Attorney General is found in Article 76 okay এবং ফার্স্ট হলো আমরা কি ফার্স্ট অ্যাটর্নি জেনারেল ফার্স্ট এজি এমসি সেতেলভাট okay MC Setalbhaj that is sort of a qualification appointment 76 is a constitutional office highest law officer of India okay that is all about your Attorney General now we should discuss some MCQs on that possible questions okay so any doubt you can ask me those who are watching yes
Okay. Two of the following presidents was not elected as president. That is D. G.S. Pathak, fourth, fourth vice president. He could not become accurate. Answer is D. Chronological order of the vice president. G.S. आगे जाकिर हुसैन रहे तापर G.S. पाठक तापर B.D. जत्ती तापर के आर नारायण. So 3-1-4-2. Sorry, that is B. Who among the following prime ministers of India was not a chief minister of India? Chief minister समझते ही चंदे. Chief minister हमारे देखिए जी CMs became PM. এটা আমরা देखिए जी मोरारजी देसाई. तापरे चरण सिंह. मोरारजी देसाई बॉम्बे रा. बॉम्बे प्रोविंस. এটা यूनाइटेड प्रोविंस. तापरे बॉम्बे रो गले तापरे रहिबो हमर किए मोरारजी देसाई चरण सिंह तापरे पीवी नरसिंह राव तापरे एसडी देवगौड़ा कर्नाटक रा एसडी देवगौड़ा वीपी सिंह ओके तापरे नरेंद्र मोदी एन मोदी. जो प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर तो सेटा को जेटा आईके गुजराल आंसर सी. Okay. Consider the following statements. The Prime Minister of India is appointed by the President of India. Yes. That is right. At the time of appointment, Prime Minister must be member of Parliament of Canada. PM has a fixed term of 5 years. No, fixed term तक किछ नहीं. जति दिन जाए तक मेजॉरिटी थी वो शासन करी. Okay. So answer will be only one. The electoral college of vice president consists of रिटर्म कहलेनी. अच्छा এটা হবো all members of लोकसभा एंड राज्यसभा. तांकर इलेक्टोरल कॉलेज रे वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट करो इलेक्टोरल कॉलेज रे एमएलएज रहिबे इलेक्टेड एमएलएज इलेक्टेड एमपीज बट वाइस प्रेसिडेंट करो मेंबर रे ऑल मेंबर्स माने इलेक्टेड एंड ओके. The answer is D. এটা কোন आंसर হলো? आंसर হলো A. এটা D. Now, which among the following is incorrect about vice president? Is the ex officio chairperson of Rajya Sabha, Article 64. Vice president candidates has to make yes. President 20 years. He should be member of Lok Sabha. No. Answer is D. Which chronological order of prime minister? Minister आगे इंदिरा गांधी आसीबे तापरे मोरारजी देसाई आसीबे तापर चरण सिंह आसीबे तो राजीव गांधी आसीबे. 1 2 4 सॉरी এটা কোন এমতি গেলা. তাহলে আচ্ছা
तो ठीक है 1 2 1 2 4 3 এটা করিবা এটা 3 कर दियो okay so that is 1 2 4 3 4 3 होगा चरण सिंह राजीव लास्ट C which among the following about prime minister is not correct the term of prime minister fixed at 6 years भूल total fixed नहीं तरह he allocates reshuffles various portfolios not correct कर दिया जाबो बाकी उरे देखी दिया allocates reshuffles ठीक है minister only authority to recommend dissolution yes declares policy yes so ministers of council ministers may be chosen from outside union minister may be D ହେବ okay so now which chronological order of the prime minister chronological order table of precedence of council of ministers in the center prime minister cabinet minister 1 2 3 4 so 1 2 3 4 the council of ministers headed by prime minister is collectively responsible to Lok Sabha ठीक है no confidence motion against ruling party can be introduced to Lok Sabha ठीक है so that is correct explanation of it the only vice president die in office to die in office Krishnakant who among the following was not a deputy prime minister deputy prime minister ଉପରେ ମୁଁ କହୁଛି deputy prime minister is not a constitutional office constitution mention नहीं he is the senior most member in the council of ministers deputy prime minister এবং deputy minister আমরা রয়েছেন সর্দার পটেল ফার্স্ট সর্দার পটেল তারপরে মোরারজি দেশাই চরণ সিং ओके चरण सिंह ଆଉ ମୋରାରଜି ଦେଶାଇ ଚରଣ ସିଂ ଜନ୍ ମାଥାଇ ତାପରେ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ବାବୁ ଜଗଜ୍ଜୀବନ ରାମ ବାବୁ ଜଗଜ୍ଜୀବନ ରାମ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲିଗଲେ ତାପରେ ହେଲା ଏଲ୍.କେ. ଆଲବାନୀ ସରି ଦେବୀଲାଲ ତାପରେ ଏଲ୍.କେ. ଆଡବାନୀ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଡେପୁଟି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି ଏଗୁରା ତେଣୁ ଏଇଟା ସେ କହୁଛି ଏଇଟା କିଏ ନ ଏଇଟା ନ ଡି ହବ okay the concept of prime minister and council of ministers is based on Westminster model माने जो यूके मॉडल यूके मॉडल let the prime minister of UK the prime minister must be a member of lower house no so only one a
In order table of president, who is the highest ranked among the following? The vice president ଅଛନ୍ତି ଆଗ କହିଲେ ହବ second ଅଛି cabinet ଟା ବୋଧେ 8 ରେ ଆସୁଛି 8 ନା 7 8 8 এটা 5A এটা 3 এটা 2 এটা CM answer তারপরে 66 election of the vice president 69 oath 74 advice 70 duty 1 2 3 4 C. The answer is C. It is C. Which among the following is not appointed by the President of India? The President of India काहाको appointment करती नहीं. Okay. So it a speaker elected way. B. To whom the Vice President tenders his resignation letter. President. D. Vice President of India is removed by. C. Who is the ex officio chairperson of Interstate Council? Prime Minister. B. Which of the following Prime Minister does not preside? Meeting cabinet which body is a member सबुतरे करती D. Joint sitting में ताकर role नहीं. Which among the following regarded as wheel within the wheel cabinet? A. Okay. Who was the Prime Minister to resign from his or her office? First resign. First Prime Minister to resign, Morarji Desai. Which of the following is first Sardar Baldev Singh? First Defense Minister ठीक अच्छी John Mathai. First Finance में First Railway टा. Right ठीक अच्छी Answer B. बाकी ठीक अच्छी. So answer B. The maximum number of no confidence motion has been initiated in which Prime Minister Indira Gandhi? 10 times. 10 times. LH. Okay. Now come to the next slide, 25. Okay, now we shall move to the next slide for your parliament part. We shall proceed with parliament union legislature. We have completed it. Okay, so union legislature we should start now. So union legislature में executive part टा सारले union legislature में देखिले 79 ରୁ 82 part पर्यंत अछि 79 ରୁ 122 क्वेश्चन रहला part B रे deals with the organization, composition, duration, officer of the privileges of the parliament. Parliament comprises President, Lok Sabha and Rajya Sabha. President is also an integral part of Parliament. Okay, so that therefore President Lok Sabha the Parliament हम कहिबा Parliament
That is three parts of the parliament. What is Lok Sabha, what is president, और राज्यसभा कहना ताको बिल दिटा पास हेले राष्ट्रपति बिल पास हेले प्रेसिडेंट असेंट कले बिल हम तेणु जो लोकसभा राज्यसभा दुटा जो अच्छी से नाटा 1954 से नाटा करा आगुरी ना कौन थी हाउस ऑफ द पीपल लोअर हाउस फर्स्ट चैम्बर ओके Rajya Sabha is also known as Council of States, Upper House, Second Chamber, House of the Elders. So they have so many names. Okay, and the Rajya Sabha, Lok Sabha names was adopted in 1954. Kindly remember the point. That is important also. Okay. Now, move to the next slide of Union legislation. Rajya Sabha represents the states, whereas Lok Sabha represents the people of the country as a whole. ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭା represents the states union territories whereas Lok Sabha represents the people of India. I mean every person cast his vote for the member of Lok Sabha. ସେଥିପାଇଁ ଏଟା କୁହାଯାଏ ଲୋକସଭାରେ territorial representation लोकसभा इलेक्शन कौन कराई कंट्री को डिवाइड कराई राज्यसभा स्टेट रिप्रेजेंटेशन in Lok Sabha we find territorial representation, in Rajya Sabha we find state representation. लोकसभा ପାଇଁ कौन लोकसभा ପାଇଁ रे हम देखियो जदि लोकसभा ପାଇଁ ताले India is divided into various various territories. So there are electoral territories in India for Lok Sabha. Okay, so that is territories of India. That is 543 territory divide करा 543 part. That कौन territorial representation. और लोकसभा रे कौन राज्यसभा रे state representation. राज्यसभा composition जो देखिबा हमर article 80 81 रे article 80 81 okay. That is 80 article 80 এটা article 80 okay. So article 80 रे अछि parliament रे एटा करा जिवो बोली तो house of the Rajya Sabha is the upper house বা house of elderly बोली कहा जाता है. It is known as Council of States, House of Elderly, House of Elderly. Composition of Rajya Sabha, state representation Rajya Sabha maximum state 250, present strength 245. 250 to 238 are elected, 12 are nominated, 240 233 are elected, 12 are nominated. Okay. That is 233 bar are elected. Type of election, indirect election, proportional representation by means of single transferable vote system with open ballot. It is taken from
South Africa. Election to the members of Rajya Sabha. Representation according to the population of the state. Larger the UP 31 achi. UP 31 Rajya Sabha seats. Right 3 seats. Odisha 10 seats. Sikkim 71. Jar jate population 7 seats. Okay. So that is called population Odisha 10 achi. Odisha 10. So jar jate population Koku representation, Koku union territory, all union territories do not have representation in union territories. Can election, Rajya Sabha ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି କହିବାକୁ Rajya Sabha members are elected by MLAs. Member of Legislative Assembly जो union territory legislative assembly अच्छी से मैंने participate करते 3 जन UT participate करते the others have no representation small population. तापरे nomination of member राज्य सभा को nominate करा जाए किए president करती by president एवं field है कौन ना arts science literature and social service by nominate होती लिखी person specifying arts science literature social service से भारत देश लागू करते व्यक्ति बना सकती duration it is not a permanent body not subject to dissolution it is a permanent body 1/3 of its members retire after every second year second year रे आसंती एटा second year रे retire करती 1/3 after 2 years. Okay, so 1/3 at 2 years term of Rajya Sabha and just 6-year term. Rajya Sabha member. Rajya Sabha has no terms. Rajya Sabha member has a term 6 years. Vice President of India is the ex officio, but she is not a member of the House. Okay, so that is the things and who elect MLAs elect. Okay, election is conducted by election to Rajya Sabha is conducted by Election Commission of India. Actually, Lok Sabha, the Lok Sabha is the lower chamber. It is a territorial representation in Lok Sabha. Territorial representation. That means you have to see that every territory, the country is divided into territory. Okay. And Rajya Lok Sabha maximum strength is 552. The 552 रो 530 from states, 20 from union territories, 2 are to be nominated. And 545 is the maximum strength, minimum total strength 545, 530, 13 from UT, 2 are enough. Okay, there is a ban on the increase in the strength of parliament by 84th Constitutional Amendment Act 2001. There is a ban. That till kete till 2026. 2026 रे एटा ban कराइस.
The type of elections, direct election 540 on the basis of universal adult suffrage. On the basis of universal adult suffrage, Article 326. Representation of states. The representative of states in Lok Sabha directly elected by the people from the territory on the basis of universal adult suffrage. ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟେରିଟୋରିଆଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କହୁଛି କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କିଛିଟା ଟେରିଟୋରିରେ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି। Representation of union territories, ସବୁ यूनियन टेरिटोरी अच्छी एवं से एनाक्टमेंट कराई डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल 1965। तो सब यूनियन टेरिटोरीज गुरा भी वोट दे पारे। सब यूनियन टेरिटोरीज रो हैज ए रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा, बट सब यूनियन टेरिटोरी राज्यसभा रे नहीं। एवं नॉमिनेशन ऑफ मेंबर जो थिला 2 मेंबर्स एडिशनल फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी सेटा को अबॉलिश कर दिया 104 अमेंडमेंट। नाउ the members from Anglo-Indian community. Who article under है? Under Article 331. It was provided that the president to nominate Anglo-Indian members to Lok Sabha. सेटा को 104 रे अबॉलिश कराई। 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे सेटा को 2020 जे एक्सटेंड कराइला। एबे सेटा को संपूर्ण भाव में काढ़ी दिया गला, अर्थात आउ एंग्लो इंडियन मेंबर नॉमिनेट हेबेनी प्रेसिडेंट द्वारा, कारण से मानक संख्या आउ एते कंसीडरेबल नहे। सेति पई एबे से माने आउ स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दरकार करिवे नाही। ड्यूरेशन दैट इज ड्यूरेशन रा हमर जे देखिबा, ड्यूरेशन रे कोन अछि ना okay, duration not a fixed number 5 years from the date of can be extended during national emergency for a maximum period of 1 year. Example the term of 5th assembly, 5th Lok Sabha, एबे केतम लोक सभा चलछि 17th, तो 5th Lok Sabha was extended by about almost 1 year. और एटा थिला 1971 रु 77 जे पाए। एटा होची 5th लोक सभा रो टर्म से पडितले। को समय पडी परिबो? नेशनल इमरजेंसी। The term of Lok Sabha can be extended during national emergency only, not state emergency, financial emergency, something like. Extension cannot continue beyond 6 months after emergency has ceased to operate. Emergency jibaro 6 months पर्यंत maximum automatic CJ. Term of Lok Sabha member 5 years maximum at a time. Okay, that is called term of Lok Sabha. Then membership रो माने हमें क्वालिफिकेशन रो देखिबा। क्वालिफिकेशंस रो क्वालिफिकेशंस रे रहइबो कोन ना सिटीजन ऑफ इंडिया। नंबर 2 25 फॉर लोक सभा, 30 फॉर राज्यसभा। बाकी नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एरा सब क्वालिफिकेशन हो। बाकी पार्लियामेंट जहाँ चाहिए आ क्वालिफिकेशन किसी करी पारे। एवं आउटे वाला कंडीशन कोन ना जणे लोकसभा सीट रे कंटेस्ट करिया पले ताको रजिस्टर्ड हो पड़ियो जे कोनसी ये रे। ओके, जे कोनसी विधानसभा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी रे
ताको रजिस्टर्ड हबाक थिबो से जे कोनोसी जगह कंटेस्ट करि परिबो मैक्सिमम दीटा सीट पे कंटेस्ट करियो बोली कहै कोरम है कौन केते लोक रहिले माने से दिन पार्लियामेंट चालू रहिबो एटा कोनती कोरम 1/10 मेंबर कोरम मीन्स minimum number of members to be present, minimum number of present to be present to carry out proceedings in parliament. इला कोरम हम सब जगह से कोरम से 1/10 पाए अच्छी तापर डिस्क्वालिफिकेशन एटा आर्टिकल 102 disqualification. Okay. Disqualification of the members 102 under decided by president on the opinion of the parliament. Sorry, on the opinion of the election commission of India. Sorry, the election commission of India. ECI. है तापर ग्राउंड कौन एक्विजिशन ऑफ फॉरेन सिटीजनशिप नंबर 2 undeclared unsound mind number 3 that is conviction for more than 2 years number 4 okay decided by declared unsound mind then corruption alleged involvement corruption तापरे number 5 insolvency तापरे जे कोनोसी ग्राउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट अंडर रे ऐड करियबो ओके सो दीज आर द ग्राउंड्स अंडर 102 आर्टिकल रे डिस्क्वालिफाइड दैट इज अ काइंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन बाय द प्रेसिडेंट देज मु सब कारण भी देज एटी देख कोन अछि if he holds any office of profit जदि किछ आसला unsound mind undischarged insolvent in a citizen of the country disqualified in law parliament has laid down certain additional qualification of representation of people's act 1951 like जो asset declaration failure to declare asset declaration तापरे इलेक्टोरल एक्सपेंसेस उरा कहया यदि समाने न देले ठीक ड्यू डेट भितरे सेरा सब होची तांकर डिस्क्वालिफिकेशन कारण okay तापरे about decision by the president is final obtain the opinion तापरे ground of defection कहले कोन दल बदल हम कहबे दल त्याग बा दल बदल defection दल बदल तो एटा गोटे विशेष भाव में इंडियन हमर गणतांत्रिक व्यवस्था रे एटा गोटे भारी बहुत किछि गोटे बैड प्रैक्टिस थिला डिफेक्शन टा समस्ते निज मन इच्छा रे दल त्याग कर दितले सरकार परिस्थिति रे पड़ी जाउतला भांगी जाउतला सेति पई 1985 10 7 बाय
52nd Amendment Act 1985 रे डिफेक्शन कथा करागला 10 शेड्यूल एवं मेंबर डिस्क्वालिफिकेशन हम केमती ना जदि एटा एटा डिसीजन किए ने डिसाइडेड बाय स्पीकर in Lok Sabha and chairperson in Rajya Sabha. It is decide करिवे जे केतोळे जदि गोटे मेंबर if he gives up membership of the political party on which ticket जदि गोटे दल रु जिति की अन्य दल को जॉइन करिवो टर्म भितरे ताले से पळाइबो he abstains from voting in the house contrary to the direction given by his political party whip ओके ताल से तक बाहर कर दिया जीवो यदि इंडिपेंडेंट स्वाधीन प्रार्थी यदि कौन सी पार्टी को जॉइन करे से भी पड़ेगा तो 1 2 and 3 आउट ग्राउंड अछि 1 2 3 तीनटा ग्राउंड रे से बाहरी डिफेक्शन अंडर रे ओके देन ओके then any nominated member joins a political party after the expiry of 6 months within 6 months they can join कारण से माने अपोलिटिकल लोक गुरा बाहर लोक जो माने राजनीति रे नथांती से माने नॉमिनेट होती जो माने विभिन्न क्षेत्र रे पारदर्शिता लाभ करथांती तेनु से माने जदी पॉलिटिकल पार्टी रे मिसिया चाहिए मिसी परिबे विदिन 6 months ओके सो इटा होची हमरो कण जोटा जदी इटा हमरो होची कण डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन तापर वैकेटिंग ऑफ सीट्स इन आर्टिकल 90 रे अछि आर्टिकल 19 रे केमती गोटे मेंबर वैकेट करिवो सीट केमती त सीट खाली पड़े गोटे डबल मेंबरशिप ए पर्सन कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट or member of parliament or member of parliament and state legislature तेणु जदि से दुटा मेंबर हुए लोकसभा राज्यसभा ताले ताको 10 डेज भितर जणाय पड़िबो जदि 10 डेज भितर से न जणाइला ताले तार राज्यसभा सीट खाली पड़े एवं जदि दुटा सीट if a person is elected to 2 seats in Lok Sabha then he has to communicate within 10 days otherwise both the seats will fall vacant एवं जदि जड़े if a person is elected to Lok Sabha and Vidhan Sabha simultaneously then he has to vacate one seat otherwise within 10 days he has to notice which seat is going to vacate otherwise its Lok Sabha seat will fall vacant so there is a stricture mechanism because the constitution does not favor double membership okay so that is then disqualification le tankar seat khali padibo resignation ka ku debe to the presiding officer so jane MLA ba MP say he will not submit resignation to his party leader rather as a MLA he has to resign to the speaker of the Lok Sabha and chairman of Rajya Sabha okay so that is also a condition absence 60 days absent really without communication without a background vacation election to be declared by void by ECI election commission of India expelled by the house जदि बाहर कर दिया जो व्यवहार खराब पाई explained to the office of the president elected जदि हला president elected हला vice president elected हला जो member जाई परिबो appointed to the office of the governor माने vacate एवं vacate चले in case of vacancy in the seat of an MP in case of vacancy in the seat
of an MP. An election is to be held if the remaining term period of the term is beyond 1 year. Usually 6 ମାସ କୁହାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ 1 year more than 6 months ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ 1 year ଦେଖାଯାଏ and J that is called by election. It's called by election. By election. এবং the newly elected MP will remain in office for the rest of the term. ସେ 5 years ପୁରା ରହିବେନି ଯେତିକି ଦିନ ଥିବ ଟର୍ମ ତାଙ୍କର ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଯାହା ଥିବ ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ MP ରହିବେ. So that is a provision that in case a vacancy arises in the seat of an MP, election will be held if the rest period is more than 1 year or more than 1 year. Then election will be held and the newly member will remain in office for remaining period of the term. Presiding officers माने जो माने स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर एवं सब प्रिजाइडिंग अफसर था डेप्यूटी स्पीकर प्रिजाइडिंग अफसर ओके प्रिजाइडिंग अफसर लोकसभा देखिबा तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अब राज्यसभा ओके राज्यसभा सम चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन इट इज अ पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स इट इज पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स ओके तब स्पीकर बिफोर दैट वी शैल डिस्कस द स्पीकर प्रोटेम Speaker pro tem appointed by President at the beginning of new Lok Sabha. Well, appointed. He is usually a senior most member. He is usually a senior most member. He administers oath to the newly elected members. He assists the House in the election of Speaker and these are all duties of the Speaker pro tem. Remember, Speaker pro tem is appointed, not elected. But Speaker is elected. Okay, Speaker is elected, but he is not elected. Okay, so the Speaker pro tem is appointed. Speaker is elected by the members of Lok Sabha. He must be a member of Lok Sabha. Speaker. Rank तार कौन speaker rank टा speaker's rank 6th along with
rank ହେଉଛି ତାଙ୍କର CGI ସହିତ ସମାନ 6th rank. Okay, rank. ବାକି ସ୍ପିକର removed by ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି election of the speaker କହିଲି elected by the members of the Lok Sabha majority ତାପରେ vacancy election ଗଲା vacancy ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ତ ଏଟା cease to be member ଯଦି election declare ହେଲା removal by Lok Sabha resignation to deputy speaker power speaker तो बहुत था he is the head of the house major presiding officer of the house speaker of Lok Sabha derives his power from the constitution of India okay তারপরে rules of procedure and conduct of business of the house and parliamentary conventions okay তারপরে presides upon Lok Sabha maintain decorum and order during the Lok Sabha okay so that is the things you have to remember final interpreter of the constitution within the house inside the house rules of conventions certifies a bill as money bill under article 110 casting vote in case of tie in case of a tie he votes so casting vote करते so the chairs a joint sitting of parliament appoints chairperson of committee of Assembly Lok Sabha decides disqualification member under 10 schedule by anti-defection ex officio chairperson of parliamentary कहले business advisory committee speaker को committee chairman होती business advisory committee general purpose committee out committee on rules and rules committee tinta 1 2 3 okay tapare chairperson of interested parliamentary group okay এটা ଟିକେ ନଜର ରଖିବ କୋ ତାପରେ डेप्यूटी स्पीकर अच्छा तर फास्ट स्पीकर हमें देखिबा फास्ट स्पीकर तो जानथिबो जेटा जीबी मावलंकर फास्ट स्पीकर जीबी मावलंकर रवि राय फास्ट ओनली ओडिया टू बिकम the speaker of Lok Sabha with Ravi Rai okay so sita VP Singh का समय रे रवि राय फास्ट तो मीरा कुमार स्पीकर मीरा कुमार लेडी स्पीकर देन सुमित्रा महाजन सब विषय आइडिया रखिबो okay so Ravi Rai was the only Odia to become the speaker during the prime ministership of VP Singh deputy speaker भी समति किछि जानिबार नाही सेटा elected by member removed by the house resignation to speaker किछि specific power तार नाही जेतेबेले स्पीकर नथिबे से प्रिजाइड करती ऑफिस enjoys all the powers of the speaker originally or otherwise he is a member deputy speaker the chairman of Rajya Sabha same as the speaker of Lok Sabha and we have already discussed about the appointment and others under article vice president acts Rajya Sabha okay that is the things so you have to see
And with this, let us close the class. In the next class, we shall be finishing other parts. हम आज जाई गले और ओइरा sessions in parliament हम आरंभ करिया next class रे. যদি next week रे class पढ़े, your exam is going on, so केतु যদি class अब पढ़े ताले we shall be discussing sessions in parliament. Till then, let me bid you goodbye. Thank you for watching the class. Thank you again.